Namaste my dear student. Welcome back to my YouTube channel eEducator. In this video we discuss about subject social science, standard 9 subject social science, chapter number 13 India location, geological structure and physiography part 1. We discuss here the textbook exercise. Okay, previously uploaded the videos of lesson number 1, lesson number 8 are already uploaded. Remaining chapters video will be uploaded here. So if you are new and if you have not subscribed the channel, click on subscribe button to subscribe my YouTube channel. So if you subscribe, once I upload the videos, you will get notifications here. Okay, we discuss here only the textbook exercise standard 9 subject social science lesson number 13. Other chapters video will also be uploaded here. Okay, you can find the other previously uploaded chapters in the playlist of our channel. Even you can find those videos in this video description box. Okay, so share with your friends and subscribe the channels here. Okay, that chapter textbook exercise के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन नंबर 13 के बाकी सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा. ओके, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, चलो हम नंबर 1 राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 1 है कि इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन. एक्सप्लेन. यू नीड टू राइट अबाउट इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन. इंडिया हैज अ इंपॉर्टेंट लोकेशंस. As a physiography wise, India has a one of the important country. Location wise, India has a important country. Okay. While writing the answers in a notebook, you make sure that your handwriting must be the legible. आपके handwriting legible है, handwriting must be the good, and you write the answer point wise. मेक अ हैबिट टू राइट द आंसर पॉइंट वाइज. अगर आप नोटबुक में लिख रहे हो, आंसर शीट में लिख रहे हो, कहीं पर भी लिख रहे हो, मेक अ हैबिट टू राइट देम द पॉइंट वाइज. आंसर सोशल साइंस के अंदर आपको पॉइंट वाइज ही लिखने. ओके, अगर आप एग्जाम के 2 मार्क्स 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के आंसर लिख रहे हो, वो भी आपको आंसर शीट के अंदर पॉइंट्स में ही लिखने. आपकी नोटबुक में जो मार्जिन दिया गया वो बुलेट्स के लिए यूज कीजिए, मार्जिन बुलेट्स के लिए यूज कीजिए, और उनके सेंटेंसेस आपकी नोटबुक में वहां पर जो लाइंस दी गई है वहां पर लिखिए. सो राइट द आंसर्स ओके पॉइंट वाइज एंड योर हैंड राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन. अगर आपके हैंड राइटिंग अभी सही तरह से नहीं हो रहे, अच्छी तरह से नहीं हो रहे, थोड़े तो प्रैक्टिस कीजिए. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर आंसर पॉइंट वाइज ही बनाए. आपको रीड करने में भी इजी रहेगा, लिखने के लिए भी इजी हो जाएगा. कि फर्स्ट पॉइंट क्या है? जियोग्राफिकली इंडिया लाइज इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इफ यू डिवाइड नॉर्थर्न सदर्न हेमिस्फीयर, तो अर्थ के 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, तो जो इंडिया आता है वो कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? वो इंडिया आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. इंडिया आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ईस्ट वेस्ट डिवाइड किया जाए तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा. सो इंडिया लाइज इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. कौन से हेमिस्फीयर में? इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ एशिया. ओके, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, एंड इन दिस एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया के कौन से कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में आता है? इन द साउथ एशिया. इट लाइज इनटू द साउथ पार्ट ऑफ एशिया. So in the north, lofty mountain. In the north side of India, we have lofty mountain. Okay, high peak mountains are located. Which mountain ranges? The Himalayan mountain ranges, which are located in the north part of India and are spread from west to the east direction. Nearly 2,400 kilometer तक का spread है Himalayan mountain range in the north direction, north part of India. So Bay of Bengal lies in the east. Okay, in the east part of India, what we have the Bay of Bengal into the east. Bay of Bengal into the east. Arabian Sea is into the west of India. Okay, Bay of Bengal to the east. West में क्या आएगा? Arabian Sea आएगा. And Indian Ocean कहाँ पर आता है? Southern Peninsula, south of India. Indian Ocean to the south of peninsular India. Okay, India के south के अंदर Indian Ocean आता है, east के अंदर Bay of Bengal, और अरेबियन सी कहां पर आएगा? वेस्ट डायरेक्शन पर आता है. सो द सी इज यूटिलाइज वाटरवे. इंडिया के थ्री साइड वी हैव द
okay, water. So these sea, the Bay of Bengal, Arabian Sea, Indian Oceans, they are utilized as a waterway. So waterway is one of the cheapest means of transportation. Bulky transportation के लिए बहुत सस्ता transportation होता है. तो sea is utilized as a waterway to export and import के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है. India had a trade relations with the East African countries. So we had a trade relations since many years here. ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, ईस्ट अफ्रीका के साथ रहता है हमारा रिलेशन, ट्रेड रिलेशन. वी हैड ट्रेड रिलेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज. साउथ एशिया के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन है. साउथ ईस्ट एशियन सिंस ancient times we had relations. We maintain relations because of waterways there. Easily waterways are connected here. Okay, Indian Oceans are connected to East Africa, West Asia, South Asia and Southeast Asian countries are connected through the sea route to India. So we can easily import and export here. Oceans have give important contribution to the development and coordinate relations in Indian time, and because of ocean route, because of a sea route, we were able to develop a good friendly relations within the country. These are East African country, West Asian country के साथ. So thus India has a strategic locations in Eastern Hemisphere. You can call in Eastern Hemisphere. आप Northern Hemisphere भी बोल सकते हो. Eastern Hemisphere के अंदर एक that important location पर India आता है. Okay, number 2. Why is the physiography of India diversified? Why is the physiography of India diversified? Differentiate physiography अलग अलग क्यों India के अंदर? So India in the north of lofty mountain. What is the north of lofty mountain ranges spread of west to the east direction? North of west we have the lofty mountain. High peak mountains are there. Okay, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 meter high mountain. Okay, peaks are located in the part of Himalaya. Many plateaus, summits and passes are seen in lofty mountain ranges. We found number of plateaus in the mountain ranges. High peaks are located there. Summits, peaks are located there, and number of passes are there. Passes, the way in the mountain. To cross the mountain, certain natural ways are formed there. Roads are there जो naturally बने हुए जो आप mountain को cross करने के लिए use किए जाते हैं. So they are seen in lofty mountain ranges. Ganga, Yamuna, Brahmaputra, these are the major river flows from the Himalayas. Ganga, Yamuna, Brahmaputra, many other rivers are also there, but majorly these rivers flow in the northern plain. They originate from the Himalayas and flow in the north part of India, northern plain. And their alluvial deposits form this plain, and the river which originated from the Himalaya, Ganga, Yamuna and Brahmaputra, they framed they form the alluvial plain, northern plain, great northern plain of India is किससे बनाए, किसने बनाया? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. सतलुज रिवर भी है, सिंधु रिवर भी बोल सकते हो, इंडस रिवर भी है. These rivers are they river from the northern plain of India. Alluvial deposit. Alluvial means the particles which brought by the river from the mountain. The water flow is slow down. The deposit the particles there, and after the deposition of the particle, plain areas formed by the river, which we India के अंदर जिसको हम northern plain से जानते हैं, great northern plain से ज़्यादा पंजाब से लेकर पूरा बिहार तक का, असम तक वो spread हुआ है. So two ghats on the two sides of a plateau in the two directions, eastern ghat and western ghats, better known as eastern and western ghat. Ghats on the two sides of a plateaus, coastal plains on the eastern and western margins are also situated here. Two ghats, eastern ghats and western ghat, and the narrow plains are formed on the eastern direction and western direction, which known as eastern coastal plain and western coastal plain there. So these are located in both the parts of a country, eastern side and in the western side. Thus India holds a diversified physiography. If you said India holds a diversified physiography, in the country we have the mountain, we have the plain areas, we have the deserts areas, we have the ghat, coastal plains areas, plateau regions in India. So we can say that India holds a diversified physiography.
Third number, why has the international trade of India become easy? Why has the international trade of India become and becomes easy? कैसे वो easy हो गया? With the beginning of Suez Canal in 1869, Suez Canal की शुरुआत हुई कौन से टाइम पे? 1869 के अंदर Suez Canal की शुरुआत हुई. So Suez Canals open in 1869, connected to water bodies, Red Sea and Mediterranean Sea को connect किया. Small canal was constructed और उसका क्या था? So because of that, distance between India and Europe has reduced 7,000 kilometer. So पहले आपको यूरोपियन कंट्री में जाना है तो अफ्रीकन सरकमफरेंस से होते हुए आपको यूरोप में जाना पड़ता था. डायरेक्टली सी कनेक्टेड नहीं था. सो विद द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में थोड़ा लैंड एरिया था, जो लैंड से कनेक्टेड एरिया था, वहां से वो निकाला और कैनाल बनाया गया. ह्यूमन मेड बड़ा सा कैनाल बनाया जिसके अंदर शिप आप लेकर आ जा सकते हो वहां पर. सो इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड था वो 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था बहुत ही कम हो गया. तो आराम से आप इंडिया से यूरोप में जा सकते हो. कैसे? 1869 के अंदर सुएज कैनाल का कहाँ से ओपन, बाद में यूरोप से आप अमेरिकन कंट्री के उस साइड की कंट्री में भी आराम से पहुंच सकते हो. सो ट्रेड डिस्टेंस ऑफ 7,000 किलोमीटर हैज बीन रिड्यूस्ड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज with the opening of a Suez Canal in 1869. Now, sea routes connecting East and Southeast Asia and Australia to Africa and Europe pass through the Indian Ocean. So, if you want to, आपको यूरोप कंट्री से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना है कि यूरोप कंट्री के साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर जाना है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थाईलैंड है, ओके, उस साइड पे जाना है, फिलीपींस है, उस साइड की कंट्री पर जाना है आपको, तो आपको इंडियन रूट का यूज करना पड़ेगा. नीड टू बी दोज यूरोपियन कंट्रीज नीड टू बी यूज्ड बाय, ओके, तो आपको आराम से इंडियन ओशन से आप वहां पर आराम से जा सकते हो. ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया टू अफ्रीका एंड यूरोप पासेस थ्रू द इंडियन ओशन. सो सर्कम ऑफ अफ्रीकन वाटरवेज एंड सुएज कैनाल वाटरवेज पास बाय द इंडिया. सो सब आपको अफ्रीकन कंट्री से भी जाना तो इंडियन ओशन का भी यूज करना पड़ेगा. सो सर्कम अफ्रीकन वाटरवेज and Suez Canal waterway passed by the India. So Canada and USA can be reached through the same waterways via Strait of Malacca and the Pacific Oceans here. Okay, you can reach to the Canada and USA through these same waterways. Even okay, Strait of Malacca मतलब sorry, ये मलक्का का जो स्ट्रेट आया हुआ है मलेशिया के वहाँ पर स्ट्रेट है. Okay, the narrow waterway between two लैंड इज नोन एज स्ट्रेट. कि दो लैंड एरिया होता है उसके बीच में नेचुरली जो वे बना रहता है जहाँ पर पानी रहता है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं. कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, नेरो जो पानी का रहता है, दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं. So that considered as a strait and of Malacca and the Pacific Ocean. आप Strait of Malacca से Pacific Ocean, जापान की साइड, उस साइड आप आराम से जा सकते हो. So that international trade of India become easy, okay, with the opening of a Suez Canal and because of the strategic location of India, that international trade of India become very easy. Fourth number, India has become a place of a cultural confluence. Explained here. Cultural confluence, number of people who live together here, and it become a confluence, merger of all the cultures in India. India holds a unique position among the countries of the world. If we compare the culture-wise, countries with India, different world's countries, we have the unique position in terms of cultures in the world. So India is a country having the largest democracy. We have the largest democracies in the world, largest democratic country in the world, and culture one of the oldest. India has a oldest, more than 5,000-year-old cultures seen in India. Sindhu Valley civilization से develop हुआ है culture India के अंदर. So it has the largest democracies in the world, okay? And Indian culture has accepted all the religions people. India is a secular country. So all the religions in the countries are considered equal. All the peoples in the countries are considered equal here. So as a religions wise, so all in India,
cultural has accepted all the religions people, so impartially towards all the religions, peoples and races in this peculiar characteristic of impartiality. Impartiality means they are considered as a equals. All the religious peoples are there is no partiality, कहीं का भी partiality नहीं है, impartiality कोई भी partiality नहीं की जाती है कोई भी religion के साथ. All the religions are considered equal, the major or minor religions in the country. So that is one of the peculiar characteristic of India. That's why we can say that India has become a cultural confluence. Okay, fifth number state how many and which are the tectonic plates. How many and which are the tectonic plates here? So we have there are 7 tectonic plates. How many है कितनी 7 tectonic plates which are first number Pacific plate, second North American plate, third number South American plate, fourth number Eurasian plate, fifth number African plate, sixth number Indo-Australian plate, and 7 number Antarctic plate. These are the tectonic plates we are located in the world here. 7 tectonic plates. Question number 2, explain the concept of the following term. Standard time. Okay, standard times. That what is standard time? The official times of a country, generally the one meridians are decided is standard time, or more than one meridians are also there. Large country होगा तो दो meridian भी ली जाती है वहाँ पर. The official time of a country rather than the using a local time के use करने से पहले एक meridian के ऊपर से standard time लिया जाता है. The standard time is decided on the meridian for a countries here. That is considered as standard time. Okay, that we consider standard time equal time for all the countries. Local time आपका अलग-अलग हो सकता है. ओके, लोकल टाइम ना दिखने के लिए पूरी कंट्री के अंदर ओके अच्छी तरह से कोई कम्युनिकेशन कनेक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, सो स्टैंडर्ड टाइम होना जरूरी है. पूरी कंट्री के लिए एक ही टाइम होना जरूरी है. सो दैट स्टैंडर्ड टाइम इज डिसाइडेड ऑन द मेरिडियन ईयर, द ऑफिशियल टाइम्स ऑफ अ कंट्रीज रादर देन यूजिंग अ लोकल टाइम. स्टैंडर्ड टाइम इज डिसाइडेड ऑन अ मेरिडियंस ऑफ अ कंट्री. 82.5 डिग्री ईस्टर्न longitudes of India. Eastern longitude of India is a standard times, standard meridians of India. तो standard time line आप बोल सकते हो उनको. Second number, Tropic of Cancer. So latitudes are 23 degree and 30 minute north divide India into 2 parts. Equally pass to the गुजरात से लेकर पास होती है 23 degree 30 minute northern latitudes. Okay, that divide India into 2 parts which known as a Tropic of Cancer. Tropic of Cancer से उसको जाना जाता है. Third number, peninsula. What is called a peninsula? A land area surrounded by the 3 sides of water. Any land masses is surrounded 3 sides of water, 1 side land, 3 sides of water is called a peninsula. Like South India, it is called as a peninsula. South India, Arabian Sea, one side Bay of Bengal, and we have the southern के side देखा जाए तो हमें है Indian Ocean. So peninsula, the land mass is surrounded by 3 sides of water. Fourth number, diversion. Diversion का मतलब क्या है कि object which are moving away from each other is called diversion. Diversion plate, textbook में diversion plate, the plates which are moving each other, the moving away from each other there is considered as a diversion plate. Diversion object which are moving away from, एक दोनों जो एक दूसरे से दूर जाते हैं, that considered a diversion. Fifth number, hemisphere. Hemisphere means one of the one half of the earth. Hemisphere में half part of earth. अर्थ का हाफ पार्ट जो होता है उसको हेमिस्फीयर बोला जाता है. ओके, वन हाफ ऑफ द अर्थ हियर, अर्थ का जो हाफ पार्ट ये. सो इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर. इमेजिनरी लाइंस वी हैव ड्रॉन ऑन द ग्लोब, इफ यू थिंक दैट, सो इट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, इक्वेटर के देखा जाए अर्थ के 2 पार्ट होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर हियर. सो हेमिस्फीयर हाफ ऑफ द अर्थ. Okay, circulation, the movement to and fro or around something here. Circulation किसी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घूमता रहना. Okay, circulation x. Okay, one and fro x डायरेक्शन से दूसरी साइड पर मूवमेंट करना, और अराउंड समथिंग किसी के सेंटर में रखकर किसी के थ्रू ऐसे घूमना गोल गोल, कंसिडर द सर्कुलेशंस. Answer the following question. Long answers are here. Okay, give information about the locations and area of India. So here we need to write about
लोकेशन एंड एरिया ऑफ इंडिया, लोकेशन और एरिया के बारे में लिखना है. फर्स्ट वी राइट अबाउट अ लोकेशन. जियोग्राफिकली इंडिया लाइज इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यू कैन आल्सो कॉल देम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है. सो इज लाइज इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. व्हाट इज द स्पैन ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया? इंडिया का जो मेनलैंड स्पैन है वो किस किस बीच में स्प्रेड हुआ है? मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थर्न लेटीट्यूड्स. ओके, नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड जो दिखा जाए इंडिया का, ओके, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये दो लेटीट्यूड्स है. 8 डिग्री 4 मिनट जो आएगा वो कहाँ पर आएगा? लास्ट में आएगा, जो केरला वाला पार्ट है वहां पर, अंडमान निकोबार वाला जो लास्ट पॉइंट आएगा. 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इट स्प्रेड टू द 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. इट इज अ लेटीट्यूड्स ऑफ इंडिया. ओके, लेटीट्यूड्स ऑफ इंडिया, ए लाइन और ए लाइन, ए बीच में इंडिया आया हुआ है. ओके, ये दोनों के बीच में इंडिया. ये बोला जाए तो 8 डिग्री वाला 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर वाला जो नॉर्दर्न मोस्ट आता है 37 डिग्री 6 मिनट ही है. ओके, श्रीलंका से यहाँ से जो पास होता है इंडिया का, और ये जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर टॉप में, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न. ओके, एंड latitudes, and from 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minutes ईस्टर्न longitudes. ये जो longitudes है, एक लाइन ये जो गुजरात से पास होती है वो, और एक लास्ट में जाएगा अरुणाचल प्रदेश वाला. साथ में अरुणाचल प्रदेश हम लोग यहाँ पर एक लाइन यहाँ से पास होती है अरुणाचल प्रदेश. एक गुजरात को टच होकर पास होती है वो 68 डिग्री 7 मिनट वाली लाइन है. 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात से टच होकर पास होती है, और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर टच होकर पास होगी, दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वाला. सो इंडिया लाइज इन दिस grid here. Which grid? 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute northern hemisphere. आप में ये एक सिंगल डैश गया, दैट इज रीड एज अ मिनट्स, और उसके ऊपर डबल होगा तो उसको सेकंड से नाम से रीड किया जाएगा. सो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स. Remember this number 68 degree 7 minutes to 97 degree 25 minute eastern longitudes lines आती है. Okay, now Tropic of Cancer, which is located 23 degree 5 minute north latitudes and divides the country into two parts. Standard meridian of India. So what is the standard meridian of India? 82 degree 30 minute eastern longitudes. 82 degree 30 minute eastern longitudes, which is considered the standard meridian of India. Standard meridian से इंडिया का टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड से डिसाइड किया जाता है. Okay, Bay of Bengal lies to the east direction में क्या? We already studied east, Arabian Sea west, and Indian Ocean to the south of. Now area of India, locations clear. Now the area. So the length between Kashmir to Kanyakumari is 3214 kilometer. Okay, 3214 किलोमीटर. जम्मू कश्मीर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, जो लास्ट में पार्ट आता है, जम्मू कश्मीर टू द कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर. एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश क्या है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. Okay, between Kashmir to Kanyakumari 3214 kilometer, while Gujarat to Arunachal Pradesh 2933 kilometer. Now total area of India is 32.8 lakh square kilometer. What is total area? Square kilometer कितना? Remember this 32.8 lakh square kilometer, and India ranks 7th in the world in terms of area. In terms of area, India is a 7th largest country. Like as per the area wise, Russia is the largest countries in the world. So India is a 7th largest country. 7th largest country after the Australia. Australia 6 number पर आता है. Now second number, how was India benefited due to the opening of a Suez Canal? It already one answer was there. Same kind of answers here. Okay, with the beginning of a Suez Canal, 1869, Suez Canal was opened, and because of the distance between India and Europe has reduced about 7,000 kilometer.
As a distance has been reduced between them, so trade become very easy to reach in European countries. So as a result, the international trade between India and Europe become easier, and it increased to a great extent here. More import and export increased, trade between India and Europe has been increased here and become very easy. So it was easy to reach in a European country. Now goods and ideas are being exchanged with the countries for the world through waterways since ancient times. So since ancient time we were using the this sea route there, but with the opening of Suez Canal in 1869, it became very easier and become a more faster trade between the European countries here. So goods and ideas has been changed between those European countries and other African countries. So India has a contacts with many countries since many centuries. Since many centuries, we have been trading to the African countries and European countries through the sea route and through the sea and land route. So concept of Upanishads, stories, the values of India, concept of Upanishads, stories of Ramayana, Panchatantras, Indian numerical figures, decimal systems of decimal system of India, and could reach the many parts of a world here because of exchange of values, exchange of ideas, exchanging our trades. So we have exchanged our ideas, thoughts to different countries here. हम दूसरी जगह पर जाते थे, उसकी वजह से the stories Ramayana, Panchatantras, numerical figures, decimal systems of India can be reached other parts of countries. Now give a detailed account about the structure of the earth. Structure of earth का formation जो हुआ है कैसे बना हुआ है उसके बारे में थोड़ा information लिखना है हमें. So the crust of the earth floats over the semi-liquid rocks of the asthenosphere here. Okay, the crust of earth जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, that's considered earth has a three layer. Okay, three layers. Uppermost layer of is considered the crust, mantle and core. Core को inner core, outer core में divide किया जाता है. Okay, crust, mantle and core. The uppermost layer of Earth's surface is believed that it float over asthenosphere. Asthenosphere means the sphere of a molten magma, molten rock से जो layer बना हुआ है inner part of Earth's surface, जिसको asthenosphere बोला जाता है. जो volcanic eruption होता है जब बाहर आता है, ये जो layer बना है उसको asthenosphere बोलते हैं. So liquid rocks, liquid rock के all the materials are liquid, semi-liquid, like a toothpaste जैसा semi-liquid type का वो रहता है asthenosphere. So heat is generated due to the radioactive process in the interior of the earth. Okay, radioactive because of heat are generated and they are moved in a circular manner. ऐसे नीचे से ऊपर की side आती है. Okay, heats which are generated in interior part of earth, it moves ups and downs. ऐसे movement, circulation में movement कर दीजिए. So radioactive process in the interior of earth. And it tend to reach the surface of the earth by generating conventional currents here. So as a conventional currents are there, ups and down currents are generated there, and the heats which used to come from the upper layers of a surface, so reach to the surface earth by generating conventional currents, and these upward currents break the layers. When these currents from the asthenosphere से जो currents ऊपर आता है, okay, ऐसे नीचे फार्म सर्कुलर में फिर से मूवमेंट करने लगते हैं. जब जो मेंटल वाला एरिया है, मोल्टन मैग्मा है, वो धीरे धीरे ऊपर आता है. सो समटाइम्स क्या होता है, विद फोर्स, बहुत ज्यादा ही फोर्स हो जाता है, तो अपर लेयर जो क्रस्ट होता है उसको ब्लास्ट कर देता है, वो ब्रेक कर देता है इनटू द लार्ज स्पीशीज which known as lithospheric plates, and it can be known as a tectonic. So this process initially देखा जाए तो when the earth was formed, it was only one land masses, उसको एक ही land mass बोलते हैं, that was called the Pangea. Later on these process, which process, that conventional current, generating conventional currents, a radioactive process continuously started in the interior part of earth. These uppermost of a layers crust was divided into different pieces, दो part में divide हुआ. Angara land, Gondwana land से जाना गया, India is a part of a Gondwana land. Later on continuously movement of these the process
again the earth crust has divided into the different tectonic plates. Presently we have a 7 tectonic plates. earth crust को अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड कर दिया है because of radioactive process in the interior part of earth and movement of these molten magma से जो molten magma जो है मूव करता है okay, उसकी वजह से the earth crust was divided into different plates जिसको हम tectonic plates बोलते हैं और that is called the lithospheric plate. टोटल कितनी 7 लिथोस्फेरिक प्लेट दी गई आपके टेक्स्ट बुक में और प्लेट का एक पेज नंबर 103 पर आपको एक मैप भी देखने के लिए मिलेगा. आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्लेट्स विच आर लोकेटेड हियर टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग आई हुई है. ओके नाउ दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स जो दिए गए उससे रिलेटेड आंसर यहाँ पर पहले से ही आ गए हैं. अब देख सकते हो कि कौन कौन से फर्स्ट में डी है. थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया द स्टैंडर्ड मेरिडियन डज नॉट पास. देखिए इसमें लिखा है डज नॉट पास, किसमें से पास नहीं होती उसको आपको लिखना है. डज नॉट पास, स्टैंडर्ड मेरिडियन डज नॉट पास, डज नॉट पास, पास नहीं होती है तो आएगा डी ऑप्शन है. तमिलनाडु से पास नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश वो आ जाता है. आंसर आएगा फर्स्ट में दी ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है कि तमिलनाडु. नॉर्थ ऑफ इंडिया चाइना, इंडिया के नॉर्थ में क्या है चाइना. देखिए नॉर्थ ऑफ इंडिया क्या आता है चाइना. टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया क्या बी पाकिस्तान आता है. नॉर्थ वेस्ट में क्या आएगा पाकिस्तान आएगा. एंड अरेंज द फॉलोइंग मैटर्स इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स, स्टेट्स इन द नॉर्थ टू द साउथ. नॉर्थ टू द साउथ सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट आएगा, उसके बाद में धीरे 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 होते हुए साउथ में जाना है. लिस्ट ऑफ स्टेट्स आर गिवन हियर, स्टेट का लिस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है. आपको उनको अरेंज करना है. सबसे पहले नॉर्दर्न स्टेट लिखना है, बाद में उसके साउथ 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 वाला स्टेट आपको लिखना है यहाँ पर. सो ऑप्शन ये तो सबसे पहले नॉर्दर्न में उत्तराखंड तो यहाँ पर आता है. उसके बाद क्या है दिल्ली है. ओके यहाँ पर दिल्ली है. मध्य प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है, केरला सबसे लास्ट में. तो डी ए ऑप्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है, डी, बी एंड ए. यहाँ पर भी आंसर ये थोड़ा इफेक्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, उसकी वजह से आंसर आ गया है. फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरियाज देन द इंडिया. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जर इन एरियाज देन इंडिया. इंडिया से कंपैरिजन में लार्जर कंट्री कौन सा है. बाकी एक ही है कनाडा, आराम से पता चल जाएगा आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट. टू फाइंड इनकरेक्ट एज ए नेबर्स ऑफ इंडिया, देखा जाए एक नेबरिंग के इंडिया में इनकरेक्ट कौन सा है. आंसर तो डी ही है. देखिए अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट, चाइना नॉर्थ, बांग्लादेश में के वेस्ट ने, बांग्लादेश किस में आता है ईस्ट में आता है. इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में बांग्लादेश आता है. तो वेस्ट लिखा हुआ है, दैट इज ओके. सो डी इज अ करेक्ट आंसर. Okay, hope you like these videos and I'm able to solve your answers here. And if you ever still any queries